स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माई सेल्फ उत्कर्ष सिंह, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 49 एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड सीरीज, जहां पर बेसिकली वी ट्राई टू कवर वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल theories, themes, concepts, topics, key terminologies within a time period of around 8 to 12 minutes. All right. So, if you are following this series continuously, you are aware of the fact that currently we are dealing with Unit 2.5. Paper 1 का जो topic है Unit 2.5 that precisely deals with kinship. All right. So, today we are dealing with two terms or two concepts rather we can say, that is avoidance. The other is Taknonymy or Taknonymy. All right. So, what are these terms? Firstly, we need to know how we can categorize or how we can understand the nature of these terms. So, these are nothing but certain kinship behaviors or kinship uses which are identified among a lot of primitive societies, simple societies, and also in some of the contemporary societies as well. All right. So, we'll begin firstly with avoidance. Now, the very word avoidance give you a brief idea of what it is all about. When we use the word avoid, basically we are trying to maintain a distance with somebody. I say I want to make distance from this particular series that we are taking on YouTube, so I'll be avoiding it. I'll say ki no, we have conducted nearly, it is going to be 50 lectures. It is lecture number 49, so next video is going to be the 50th video. So I might say that it is going to the 50th video, and I'll be avoiding the series for a certain time being right now. So that kind of behavior can be categorized as avoidance. No, not exactly. When we are reading it in social anthropology under kinship studies, avoidance is precisely a type of kinship behavior or kinship uses where there is a distance maintained physically, behaviorally, and in all other regards between two kins. So the boundaries are pretty much set in that two people cannot get very close to each other. They have to avoid, what are the criteria? They have to avoid closeness, they have to avoid interaction, limited communication, behavioral distancing, ठीक है, avoiding over familiarity. So these are the various attributes when we talk about this kinship behavior. All right. So avoidance को आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर समझ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसी रिलेशनशिप सबसे पहले दो सवाल उठते हैं, किनके बीच में चाहिए होंगे? Who are the people, who are the parties, who are the relatives amongst whom you'll need such type of kinship behavior? Because of course within a family, amongst the kinship, amongst the kins, basically the better idea is to have a reciprocal feeling of love, mutual affection, closeness, bonded nature of the family is all that we desire. So why come we basically have such type of practice? Why do certain people have this type, certain communities have certain restrictions on familiarity, communication, interaction? So basically you need to understand that this type of behavior is mostly seen amongst people of opposite sexes across different generations. So usually the mother-in-law will have this avoidance with the son-in-law. The father-in-law will have this type of basically behavior with the daughter-in-law. And when the anthropologists tried to understand what could be the factors that are driving such type of behavior within the society, so multiple theories emerged. We are going to discuss only a couple of popular ones because the time period we have is very shorter. Indeed, 8 to 9 minutes we have, and we have to discuss two topics. So the first idea is that this type of behavior will reduce the chances of incest.
है ना? So this avoidance is basically a technique to avoid incest type of relationship within the family. I hope you are pretty much aware with the concept of incest. If you are not, try to visit the earlier lecture in the series, in the demystified series only. All right. So in the societies where the values or the learnings pertaining to incest are not articulated quite well or are not internalized within the journal fabric or the ethos of the familial values quite expressive nature, in a quite expressive nature, these type of behavior becomes quite unavoidable. You know, they are most of the times welcomed to set a framework of which type of interactions are permitted or which type of behaviors are to be undertaken amongst various kinship. All right. So first is this reason. Second is basically it also shows a certain degree of respect towards elders. Now, between the elder brother-in-law and the sister-in-law, also this type of behavior is seen. So at times, certain scholars do believe that it is also a way of showing regards, respect, and all these type of feelings towards the elders. So there are multiple reasons, but these two are the mostly popular ones. ठीक है ना? So the next one in line which we are to discuss is the term or the concept of Taknonymy. Now, what does this term Taknonymy means? See, Taknonymy is a type of kinship behavior where you are referring to the kin by some third individual's name, by certain third person's name. All right. So there is a person A and there's a person B. And if you have to call person B, you are not directly calling him whatever his name. Let us suppose his name is B only. So A is not calling B, come here. He is addressing the member B with the term which is associated with some third member. All right. So there is a mediation that is seen in the articulation or the communication between the two members, mostly from the side of one of the member. All right. In general, this Taknonymy term, if you see the root word taken on, this taken, the word which is used in the earlier part of the terminology, it basically stands for child. So here in some of the society, Taknonymy is basically referring to the parent by the child's name. Referring to the parent by the child's name. All right. And it is seen among like lot of communities. It is seen in Bangladesh. It is seen among the Juni community, the simple society, a tribal population. It is also seen among certain communities of Africa and certainly each and every part, each and every continent of the world. Even in the Indian society, if you see, there is a general practice that at times you are not referring to the marital partner directly by his or her name. Especially among the Indian household, in the Hindu families, the woman is seeing the husband as Pati Parmeshwara, and you are not referring to the husband directly by his name. You are calling him through some third kin. Until you are not married, you might use the intermediate third person as certain nephew, or some other member of the family, younger member of the family. तो जैसा कि आप कई बार देखते होंगे within the families, the husband will be called before the child is born to the couple. The husband might be called as Rinku के चाचा, है ना? तो he is not called by his name. He is called through a third kin who is Rinku के चाचा. और जब खुद का बच्चा वहां पर हो गया तो वहां पर उसके नाम से. There was a popular TV show called as तारक मेहता का उल्टा चश्मा. I'm not sure it runs currently also or not. पहले आता था 2008-12 के समय में, काफी ये चलन में था. उसके बाद ज़्यादा फॉलो नहीं किया, तो मुझे नहीं पता अभी आता है कि नहीं आता है. पर अगर आता होगा तो वहाँ पर भी आप देखोगे देयर इज अ गुजराती हाउस होल्ड इन दैट पर्टिकुलर शो, इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, एंड द वाइफ दया बेन is basically addressing husband through the name of the child, Tappu ke Papa. She's not calling the husband directly whose name happens to be Jethalal. So she's calling him, addressing him by the name of the child, Tappu ke Papa.
So this type of behavior, we are referring the kin through some third party name, and usually it is the name of a parent being associated with the child. This type of kinship behavior is called as Taknonymy. So I hope the topic is clear to you. Let me also remind you, if you are planning to join one of our batches to learn anthropology in a more structured way, in a more detailed way, यहाँ पर आप ऊपर से चीज़ें समझ जाते हो, टर्म्स समझ जाते हो, कंसेप्ट की आइडियाज़ को समझ जाते हो, बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना, जो किताबों से नहीं होता है, जो यूट्यूब पे लेक्चर देखने से नहीं होता है, जो कि एग्जामिनेशन के तरीके से तैयारी करने से होता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, स्ट्रक्चरेशन कैसे करना है, नोट मेकिंग कैसे करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ों को करते हुए आप अगर पढ़ना चाहते हो, तो वन ऑफ आवर बैचेस हैज जस्ट स्टार्टेड, थ्योरीज पोर्शन हैज जस्ट स्टार्टेड. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड अ गुड आइडिया टू स्टार्ट एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम ईदर थ्योरीज और सोशल एंथ्रोपोलॉजी. So we are not starting with social anthropology, but this time we are starting with the theories portion. So it is the best time frame for you, and especially during this time there is a New Year sale also ongoing. So if you go to visit the website, there is a New Year sale that is ongoing. So you can get both the things at the same time. The batch that you desire, the starting from the theories portion, and the fee that you desire, discounted fee due to the New Year prices. All right. सो ये सारा आपके लिए मौका यहाँ पर मौजूद है, और इसको गवाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर बैच में आपको लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर 1.5 साल का मिल रहा होता है, और टेस्ट सीरीज भी मिल रही होती है, जहाँ पर 8 सेक्शन 4 फुल लेंथ पेपर आप देते हो. कंटेंट यूजुअली आपको कोई मैनुअल दे दी जाती है दूसरी जगहों पर, हमारे ऐसे नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से कंटेंट मिलता है. रेफरेंस के लिए आपके पास क्रक्स होता है, समरी के लिए आपके पास क्लास पीपीटी है, और रिवीजन के लिए आपके पास हैंड रिटन नोट्स है, जो कि मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट आपके लिए बना रहे हैं, और डिजिटली आईपैड पे बना रहे हैं, तो राइटिंग समझने में दिक्कत नहीं होती, और फ्लो चार्ट एग्जामिनेशन में यूज़ करते हो तो नंबर भी अच्छे आते हैं कई बार. एनरिचमेंट के लिए वैल्यू एडिशन मटेरियल दिया जाता है, ठीक है. तो सारी चीज़ें वन स्टॉप सोल्यूशन आपके पास है. टेस्ट सीरीज का भी मॉडल आंसर्स भी आपको मिलते हैं यहाँ पर, और मैं खुद एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी करता हूँ. टाइमली इवैल्यूएशन हो जाता है, जो बहुत बड़ी बात है. क्या है, मैं उसको बहुत ही, मैंने 2 सेकंड में बोल दिया, पर ये टाइमली इवैल्यूएशन इतनी बड़ी चीज़ है ना, कि ये प्रॉब्लम आप जाकर के पता करो. कोई अगर आपका दोस्त दिल्ली में ORN में करोल बाग में तैयारी कर रहा हो, पेपर दे के लोग चले आते हैं, यूजुअली टेस्ट सीट कई बार उनकी इवैल्यूएट नहीं होती, तो वो मेरी गारंटी होती है आपके पास जो ड्यू टाइम असाइंड होता है उसके अंदर में शीट्स आपकी इवैल्यूएट होकर पहुंच जाती है सही तरीके से. सो ये सारी फैसिलिटी हमारे पास है, और फी अभी लाइक US लाइव का कोड लगाते हो आप, इससे बेहतर प्राइस आपको नहीं मिलेगा जो इस समय आपको यहाँ पर मिल रहा है. कोई भी कंफ्यूजन और डाउट हो तो आप एक बार मुझे रीच आउट कर सकते हो इन आईडीज़ पे. एडमिशन लेने से रिगार्डिंग कोई कंसर्न है, इन आईडीज़ पे आप रीच आउट कीजिए. नए बच्चे हमेशा US लाइव कोड लगाएंगे StudyIQ के, सिर्फ एंथ्रो नहीं, हर एक कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट इसी कोड से मिलता है, और मेरा गाइडेंस में मिलता है आपको. साथ ही साथ दूसरी क्या चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो, जो तभी पॉसिबल है अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो StudyIQ के, पहले से किसी कोर्स में अभी एनरोल हो, या फिर कभी पहले 1-2 साल पहले एनरोल थे, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल सकता है. उसके लिए आपको मुझे मेरी आईडीज़ पे यहाँ पर रीच आउट करना होगा, और अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर करवाया था उस समय वो बताना होगा. मैं चेक करके वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड सेंड करवा दूंगा. प्रीवियस और क्वेश्चन की पूरी बुकलेट या मैनुअल को आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अलॉन्ग विद ऑल दी अदर नोट्स एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ द कॉस्ट. होपफुली आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ. टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव अ वेरी नाइस डे, साइनिंग ऑफ. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.